समथिंग जो हमें ना एकदम से एंशियस कर देती है एंड वी आर लाइक नो वी नॉट गोना गेट मैरिड, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दैट. तो just to help you understand what marriage is. Hi guys, welcome back to my channel. This is Pooja और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है because this is going to be a sit and talk video. It's been so long that I did it with you guys and I thought कि what could be better than a day where I'm actually reflecting on my life और अपने 27 years that I've lived. I usually do it around my birthday, but this time my birthday was very close to my father's retirement and you know बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो I did not really get time to sit. सारे weekends काफ़ी busy थे but I thought कि आज क्योंकि मैं free थी, थोड़ी अकेली थी तो I thought why not think about something that has happened एक साल में मेरी life में and I just thought of sharing it with you guys. तो most of you know that I got married in 2019 एंड नवंबर में और अगस्त में जब मेरा बर्थडे आया तो आई टर्न 26 एंड तब तक ना मैरिज वाज स्टिल इन अ वेरी हनीमून सॉर्ट ऑफ फेज. तो आई डिड नॉट हैव रियली मच टाइम टू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन माई लाइफ बट नाउ आई कैन से आफ्टर almost 2 years of my marriage that now I'm in a state where I can share with you guys what marriage is all about and how beautiful and tough it can be at times. I am not gonna lie but yeah, जो वो हाइप और क्रेज है ना मैरिज का एंड द स्कैरी थिंग अराउंड इट दैट इज सॉर्ट ऑफ ट्रू एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ इन so many ways for men and women. So yeah, without any further ado, I'm going to share my lessons, my tips for you. These will be very short and crisp because I don't want to bore you guys. So without any further ado, let's get started. So I have my diary here with me. It's from June Shop. They sent me when they I think hit 50k on Instagram. It also has my name here. I use this for a little journaling and stuff. So I'm gonna keep this with me and थोड़ा बहुत नीचे भी देखती रहूँगी because you know these are like lessons that I've learned over the year and I don't know कितना मुझे याद रहेगा. But yeah, I'm gonna share with you everything. So even if you are single right now or you're looking for someone, so I think this will help you clear your mind because I know a lot of us are like so scared of marriage and marriage is something जो हमें ना एकदम से anxious कर देती है and we're like no we're not gonna get married, I don't like this, I don't like that. So just to help you understand what marriage is and I'm really new to this thing so I have written this from a perspective of a newlywed and I think it will help you. So yeah, I'm gonna dive into the first point. Number one point would be you will have difficulties in your marriage, be it your first year, your 10th year or any time during the course of it because I think I have seen like जो लोग नए मैरिड होते हैं like उनकी भी लड़ाइयाँ उसी टॉपिक्स पे हो रही होती है कभी कभी जो अभी तक हमारे मॉम डैड भी लड़ रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कीप्स गोइंग ऑन एंड आप अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ मैरिज में कभी भी फेस कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी अ न्यू कपल और अ वेरी ओल्ड कपल फॉर इट. नंबर 2 वुड बी मैरिज इज़ अ चॉइस दैट यू मेक एवरी सिंगल डे. तो ऐसा नहीं है कि जब आप शादी कर रहे होते हो जो प्रोमिसेस आप तब लेते हो या जब आप प्रपोज करते हो अपने पार्टनर को उस टाइम पे जो आप प्रोमिसेस करते हो वो ऐसी वेग हैं या उसी टाइम के लिए बट दीज आर द प्रोमिसेस दैट यू कीप मेकिंग एवरी सिंगल डे. आई थिंक इट्स अ शेयर्ड कमिटमेंट और दिस इज समथिंग दैट stays with you your entire life. Number 3, you really need to understand yourself first in order to keep your partner happy or keep yourself happy in the relationship because I feel शादी से पहले मैं I have been stressing on this fact for so long कि try to discover yourself first before getting into a relationship with any person and I feel marriage के बाद तो it gets really important because अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि आप कौन हो या आपको क्या चीज़ों से खुशी मिलती है या who are you as a person then surviving in a marriage or making your marriage a success will be very difficult. That you really need to understand yourself to understand your partner or your family or your relationship. Number 4, you have to work as a team एंड ऑनेस्टली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप लोग एक टीम की तरह वर्क नहीं करोगे ना तो आप दोनों अपने आप को एज एन इंडिविजुअल्स एक दूसरे से ऊपर रखोगे. एंड आई थिंक जैसे टीम में होता है ना, इफ देयर इज़ अ प्लेयर हु गोज डाउन, यू
actually motivate them to come up, or you play on their behalf and then come up as a winner. So you both should be working towards a common goal, and that goal should be to make your marriage a success, obviously. And yeah, work together as a team. There'll be times when your partner will act bonks, but that should not stop you from work as a team. Number 5, it will not be a 50-50, honestly. Like, I have seen people say that ki nahi, both men and women equal and they equally put in efforts, but honestly, especially in India, where a girl is leaving her house and adjusting into a new family and everything, it can never really be 50-50. As girls, we leave our house. Instead of taking care of our parents, we start taking care of other people's parents ज़्यादा. आई एम नॉट सेइंग कि हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो वी कम इन टू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर. सो adjustments, the sort of adjustments we make as women is far ज़्यादा than what our husbands are doing. And abhi to I'm not in that phase, but when I look at other women who have kids, who are managing housework, everything, तो that also becomes like a very very big task. तो जो लोग कहते हैं ना 50-50 होता है कि wives and husbands both put equal efforts, yes of course they do, but still थोड़ा सा slack work का और burden का women पे ज़्यादा रहता है. Don't give me hate for this, but actually this is the thing. I'm not generalizing anything here, but that's what I feel. It gets new for you all of a sudden, and देखा जाए तो a boy never leaves his family, but you really need to stay away from your parents, from your friends, from the locality you have grown up in. So that's something which makes the whole marriage thing a little difficult for women. Number 6, this is actually a golden rule of marriage or any relationship. Don't do anything in expect of any return, because that will surely disappoint you. अगर आप कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ दिस, इवन अप्रिसिएशन. डू नॉट जस्ट एक्सपेक्ट दैट. मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये गलती करती थी कि मैं कुछ काम करती थी तो आई रियली यूज टू थिंक कि पीपल वुड अप्रिशिएट मी, या फिर मुझे ये करेंगे वो करेंगे. दे यूज टू डू इट एट टाइम्स, बट जब नहीं करते थे आई यूज टू फील डिसअपॉइंटेड. एंड I think before me, Gautam recognized that, and he told me that अगर तू कुछ भी करेगी यानी एक्सपेक्ट करेगी ना that I will or my parents or anyone in the family would appreciate you or do something like that, तो तुझे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी. एंड दैट इज़ वन थिंग दैट स्टक विद मी. और फिर I thought about it, and I really came to a point where I thought कि हाँ, maybe this is where I'm lacking. Number 7, do not depend on your partner for your happiness. And really guys, even if you are not married right now or in a relationship or not in a relationship, just single, do not depend on anyone for your happiness, because that ways you'll always end up being sad. अपनी happiness को अपने हाथ में ही रखो, and that will help you in life, in a relationship, in friendship and in general. Number 8, marriage does not give you a license to control or change your partner. बहुत टाइम तक ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो अब तो हमारी शादी हो गई है, अब हम इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे या इसको अपने हिसाब से रख लेंगे. बट इट रियली नेवर हैपन्स. विल नेवर चेंज फॉर योर पार्टनर इफ़ यू डोंट वांट टू, एंड सेम गोज विद योर पार्टनर एज वेल. तो अगर आपको अपनी पार्टनर की कोई चीज़ बॉदर कर रही है, बी वोकल अबाउट इट, टेल हिम, or just let it go. Accept that is a trait of him, or that is who he is, and he won't change. Because if you try and go and put in your efforts to change your partner or to control him, that will end up making your marriage worse. Number 9, find a communication style. अगर आप actions में believe करते हो, like जैसे आपकी लड़ाई हुई है and then you go and make something for your partner or do something for him and you feel that works and it keeps you going, so that is fine. Otherwise, start communicating more. Just find out what works for you, be it actions or words. Number 10, I feel with this I will end it. I know I told you that मैं बहुत short रखने वाली हूँ इसको, because I really don't want to bore you guys with my ज्ञान, but yeah, the number 10 point is very important. And I feel कि ये ना, मैं जब relationship में थी तब भी मैं ये feel करती थी और मैं आज तक ये feel करती हूँ. And we really need to work on this, and that is you need to understand your partner's love language.
और ये कभी भी सेम नहीं होती है दो लोगों में. लाइक आई वुड वॉन्ट माई पार्टनर टू गिव मी रोजेज और ब्रिंग चॉकलेट्स और राइट अ लव नोट टू मी, और उसका स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. शायद उसका स्टाइल बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा. दैट नो, इफ वी आर नॉट फाइटिंग, इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, देन ही वुड फील कि नहीं, सब कुछ रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज लव लैंग्वेज कुड बी. एंड ऐसा बहुत बार होता है. तो आपको अपने पार्टनर को तरीके से प्यार करना है जैसा उसको चाहिए, रादर जैसा आपको चाहिए. I hope I'm making sense and I hope you are understanding what I'm trying to say. तो just try to understand your partner's love language. Also, जो आपके स्पेशल मोमेंट्स होते हैं ना, उस टाइम पर जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, उस टाइम पर जो आपका कनेक्शन होता है, जो जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उस टाइम पर हो सकता है, आई फील उस टाइम के अलावा और कभी भी नहीं हो सकता. सो मेक श्योर यू spend a lot of time with your partner. Take out time for each other. Shadi does not mean that if you're staying together 24 hours a day, does not mean that you're giving each other time. So take out time for each other like you used to do when you were dating or in a relationship, and that would keep your marriage alive, or that would keep your marriage sparkling. I hope these tips helped you in some way or the other, or will help you in the future. अभी एक साल में मैंने ये चीज़ें सीखी हैं. I'll keep sharing with you my tips as my marriage keeps growing, touch wood. And yeah, if you're on this channel for the very first time, please check out all my videos. Don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. And I'll see you guys in the next one. Bye.